So today we will learn all about the management of type 2 diabetic mellitus. Okay, in this series I am focusing on symptoms to solution. So we will start with symptoms and then investigation and then the solution. Okay, so how the diabetic patient present to you? Patient will present like I am having increased thirst, मुझे भूख ज़्यादा लग रही है, मुझे वॉशरूम ज़्यादा जाना पड़ रहा है, मुझे बार बार स्किन और यूरिन के इन्फेक्शन होते हैं, स्लो वुंड हीलिंग मुझे लगता है उसमें घाव जल्दी नहीं भर रहा, ठीक है। और फिर ये सारे कंप्लेंट्स है तो आप क्या करोगे, आप इन्वेस्टिगेट कराओगे शुगर का, यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर, PP2BS या तो HbA1c, ठीक है। अगर इसमें से आपको शुगर डायबिटिक डिटेक्ट हो गया, या तो हम जो स्क्रीनिंग करते हैं उसमें डायबिटिक डिटेक्टेड है, या तो पेशेंट सामने से ही बोल रहा है कि डॉक्टर मुझे शुगर है, मुझे भी दवाई स्टार्ट करनी है, तो आप क्या करोगे? इफ नेसेसरी यू विल डू LFT, urine albumin creatinine ratio, fundus examination and all, but you will compulsory do serum creatinine, because serum creatinine will decide how, what will be the dosage of the drug and what will be the right drug for that patient. Now let's talk about the management. In management, first of all हम पेशेंट को बोलेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कैलोरी ज़्यादा नहीं खानी, सफिशिएंट कैलोरी में खाना है, और कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट करता है रैपिड इंसुलिन राइज, रैपिड शुगर राइज। नाउ वी विल टेल पेशेंट कि एक्सरसाइज कीजिए, अगर आप ओपेस हो तो आप वेट लॉस कीजिए, हम पेशेंट को बोलते हैं। हम कौन सी दवाई से स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़ का मैनेजमेंट? हम स्टार्ट करते हैं मेटफॉर्मिन से, मेटफॉर्मिन 500 mg OD से स्टार्ट करते हैं। अगर पेशेंट हर में एक बार दवाई ले रहे हैं उससे अच्छा हो रहा है तो फिर यही डोजेज हम स्टार्ट रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इफ पेशेंट शुगर इज नॉट कंट्रोल डिस्पाइट दिस मेडिकेशन, then we will increase it to 500 mg BD. We can even increase it to 1 gram BD. But metformin causes GI upset and we don't give it in a patient who is having low GFR. Okay, so these are the contraindication which low GFR and other GI upset. In this patient we don't give it metformin, but despite that all patients starting medication is metformin 500 mg OD till 1 gram BD. Now patient is not controlling sugar with only metformin, then we should start another drug. We should start dual therapy, and which other drug will we choose, that will decide how good doctor or how good educational academically you are. Okay, so if patient is having chronic kidney disease or heart failure और उसको पहले से कार्डियोवास्कुलर डिसीज का रिस्क है, तो आप अब चालू करेंगे SGLT2 इनहिबिटर, यानी कि डापाग्लिफोसिन 10 mg OD या तो एम्पाग्लिफोसिन 10 mg OD। पेशेंट को बोलेंगे जो आप दवाई रोज 2 बार खा रहे थे उससे भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम तीसरी नई दवाई चालू कर रहे हैं और वो है डापाग्लिफोसिन 10 mg या तो एम्पाग्लिफोसिन 10 mg OD। एम्पाग्लिफोसिन, yeah, we all can increase the dose up to 25 mg, राइट। अगर पेशेंट ज़्यादा ओबेस है और उसको कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी है, तो उसमें भी GLP-1 आ रहे बहुत बेनिफिट करवाता है, यानी कि लीराग्लुटाइड 0.6 mg subcutaneous injection daily for 1 week और the semaglutide 0.25 mg once weekly subcutaneously। इसके भी सीवी बेनिफिट ज़्यादा है, तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क में हम ये दवाई प्रिफर करेंगे। तो अब पेशेंट आपके पास आता है कार्डियोवास्कुलर रिस्क के साथ और वो पेशेंट मेटफॉर्मिन से अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम उसको सीटाग्लिप्टिन या ग्लिमिप्राइड नहीं लिखेंगे। हमें पता है कि कार्डियोवास्कुलर रिस्क से SGLT2 और GLP-1 आ रहे प्रोटेक्टिव का है, तो फिर हम यही दवाई चालू करेंगे, राइट। Now elderly patient is coming, we don't want hypoglycemia risk, in that cases we start DPP-4 inhibitors, यानी कि sitagliptin 100 mg OD। We will leave it for 1 week, we'll monitor how the patient is doing. If it's doing well, we will continue that regimen. If we want to decrease HbA1c rapidly and cost is the issue, we will give sulfonylurea, which glimepiride starting will be 1 mg OD to tablet glimepiride 2 mg BD. Now, even after this patient is insulin resistant. In insulin resistant patient, we give pioglitazone. Pioglitazone starting dose is 50 mg OD.
If very high sugar, symptomatic, HbA1c is more than 10, then we start the insulin. Insulin, glargine or determinate 10 unit address. We start it. Basal bolus is given if the catabolic symptoms are present. अगर प्रेग्नेंट है और शुगर कंट्रोल करना है तो उसकी सबसे अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस है इंसुलिन. अब फिर से मैं बता रही हूँ इन्वेस्टिगेशन क्या होगी सभी शुगर के पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट में. HbA1c, serum creatinine, and we have to reassess HbA1c in 3 months. Okay, and we can go up till triple therapy if our patient is not improving. So now we are doing wrap up. अगर डायबिटिक का पेशेंट आपके पास आता है, पेशेंट की शुगर ज़्यादा है, आपको कंट्रोल करना है, आप क्या करते हैं? आप इन्वेस्टिगेट कराओगे HbA1c, RFT और लिपिड. आप ये रिपोर्ट देखने के बाद दवाई स्टार्ट करेंगे. पहले तो बोलेंगे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करो. आप प्रिस्क्राइब करोगे भाई मेटफॉर्मिन. मेटफॉर्मिन 500 OD to 1 gram BD. Okay, if patient HbA1c is more than 9, asymptomatic, you can start dual therapy. Second line choice based on patient. If patient is having cardiovascular disease or chronic kidney disease, heart failure, then we start SGLT2 inhibitor or GLP-1 RA. If patient is obese, we will focus on GLP-1 RA, SGLT2. If cost is the issue, we will give pioglitazone. And if our concern is hypoglycemia, then we will start DPP-4 inhibitor. If nothing is working, we will start with insulin, and basal insulin will be 10 unit HS or 0.1 unit per kg. Thank you so much. Now let's meet on another video, and that video will be on PCOD. How to prescribe and manage the case of PCOD. Thank you.